Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. Hope you would be fine and staying safe at home. As you have seen on the screen that there is a heading how to make a frequency distribution table. Today our lecture is related to frequency distribution table and some technical terms. After that we will do exercise, that is exercise 23. Now this is the continuation of the previous lesson, and as already we know that a frequency distribution table is based upon three things: collection of data, classification and tabulation, and then graphical representation. So a table that represents the class intervals and the corresponding frequencies is known as frequency distribution table. Basically, a frequency distribution table contains not less than 6 to 8 classes, and it depends on the total number of items or scores or the data that is given in the question, but it should not be more than 20 to 25 classes. So a range is given. The classes must be more than 6, 7, 8, but less than 25 or 20. जैसा कि स्क्रीन पे आपको हेडिंग से जाहिर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, और इसमें जो बेसिकली चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें क्लासेस कितनी क्लासेस बनानी चाहिए। इसकी रेंज उन्होंने दी है 6, 7, 8, यानी मोर देन 5 से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। उसमें 6, 7, 8 क्लासेस जो है वो सूटेबल होती हैं, और इनकी तादाद मिनिमम ये है और मैक्सिमम जो है वो 25 से कम होनी चाहिए या 20 से कम होनी चाहिए। तो ये जो हम लेक्चर आज कर रहे हैं, जो टॉपिक कर रहे हैं, उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो अब शुरू करते हैं। Now, here you can see the basic terms associated with frequency distribution. The first one is class boundary, then class limit, then class midpoints, then class size and interval, then class frequency, and then range. So they are different terms and they have different meanings. We will explain one by one each term briefly and so that you understand easily. अगर आप स्क्रीन पे हेडिंग देख रहे हैं तो इसमें बेसिक टर्म्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इनका ताल्लुक होता है, जिनके साथ एसोसिएशन होती है, वो बताई गई हैं, जैसे कि क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स, क्लास मिड पॉइंट्स, क्लास साइज एंड इंटरवल, क्लास फ्रीक्वेंसी एंड रेंज। सो ये सब क्लास से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जैसे क्लास बाउंड्रीज, क्लास, इन जो सेम टर्म है वो है क्लास, और जो डिफरेंट है वो बाउंड्रीज, लिमिट्स, मिड पॉइंट, साइज, इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, इन सब के डिफरेंट मीनिंग है, और इनको बहुत आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए आसानी के साथ। Now the first is class boundaries. So class boundaries mean the boundaries, the walls. Class boundary is a technical term and it is used to express overlapping classes like 20,
then 30, then 30 to 40, 40 to 50, and so on. So it is a boundary that shows a limit, a minimum value and a maximum value. If you see 20 and 30, so minimum value is 20 and maximum value is 30. So this is the boundary, and between these two numbers there are many numbers. So we say 8. These are the boundaries. Boundaries mean they are defining 20 and 30. Between 20 and 30 we have to arrange the numbers. We have to see the numbers. We have to observe the numbers between 20 and 30, and then 30 and 40, and 40 and 50. And it shows a continuity. Like if you see 20 to 30, the next is 30 to 40. It is starting from the next value, that is maximum value, and then with in the next class it is a minimum value. This is 30. Then you see 40 is the maximum value, and in the next class it is the minimum value, 40 to 50, and so on. Then come to class limits. Now this class boundary is also defining class limits. The minimum number shows lower class boundary and maximum number shows upper class boundary. Class limit is also a technical term and is used to express non-overlapping classes like 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. In this, the limit is, if you see the first one, this lower class limit is 20, upper class limit is 29. Next is lower class limit is 30 and upper class limit is 39. Lower class limit is 40 and upper class limit is 49, and so on. So class boundary is also defining the class limits. एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसमें स्टैट्स में आप क्लासेस को लेते हैं और इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर तक का फासला, इसका कह सकते हैं हम बाउंड्री वॉल। जैसे बाउंड्री वॉल होती है, दीवार होती है, ऐसे ही है इसका। इसमें अगर आप देखें तो 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें अगर देखें तो एक नंबर जो है 20 और आपको मिनिमम वैल्यू शो करता है, 30 मैक्सिमम एक क्लास में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्लास भी 30 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये ओवरलैपिंग क्लासेस हैं। 30 से 40, लोअर 30 है, अपर क्या है आपके पास 40। इसी तरह 40 लोअर है एंड अपर 50 है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस बता दिया जाता है। फिर क्लास लिमिट्स में आती है। क्लास लिमिट्स में क्लास बाउंड्री की ये इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें क्लास बाउंड्रीज में तो आपको हदूद बताई जाती है क्लास की। क्लास लिमिट्स में ये बताया जाता है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपर क्लास लिमिट है। मिनिमम वैल्यू जैसे 20 है तो वो लोअर क्लास लिमिट है, अपर जो है 29 है तो वो अपर क्लास लिमिट कहलाएगी। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह इस क्लास में 30 और 39 में लोअर वैल्यू मिनिमम है, जो मिनिमम वैल्यू जो कम है वो 30 है, इसे लोअर लिमिट कहलाएगी। और 39 ज़्यादा है और इसको मैक्सिमम से भी शो करते हैं और इसे हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह 40 to 49, ये सब चीज़ें आगे इसी तरह चलती जाएंगी। क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट्स, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री यानी जो टू बाउंड्रीज होती हैं दोनों को ऐड करके टू के साथ डिवाइड किया जाता है, इन्हें तकसीम किया जाता है।
आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5 और 10 की क्लास दी हुई है और इन दोनों में वो ऐड किया 5 और 10 को और डिवाइड किया 2 से, यानी तकसीम दो से करेंगे। दो ही वैल्यूज़ हैं, 2 से ही करेंगे, तो हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाता है 7.5। इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्लास मार्क्स भी कहते हैं और मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। नंबर 4 पे आता है क्लास मैग्नीट्यूड, क्लास साइज। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे क्लास मैग्नीट्यूड, क्लास साइज, क्लास डिफरेंस, क्लास हाइट। सब एक डिफरेंट नामों के साथ हैं, लेकिन मतलब एक ही है। इसमें डिफरेंस देखा जाता है दो क्लास लिमिट्स के दरमियान, जैसे 5 और 10 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा। अब 5 और 10 क्लास अगर हम लेते हैं तो उसमें काउंटिंग हम 6 से स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, इसका डिफरेंस 5 का आएगा। यानी इसमें जो क्लास साइज बन रहा है, उनके दरमियान जो हाइट बन रही है, जो डिफरेंस बन रहा है, वो 5 का है। अगर आप 5 को भी काउंट करते हैं और 10 को भी काउंट करते हैं तो ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आपको किसी एक को काउंट करना है, या अपर क्लास लिमिट को काउंट करना है या लोअर क्लास लिमिट को। तो बेहतर ये है कि आप लोअर क्लास लिमिट को काउंट ना करें, उसको स्टार्ट करें नेक्स्ट नंबर से, और इस तरह 6, 7, जैसे कि 8, 9 और 10 को इंक्लूड करके 5 हाइट बन जाती है। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। Dear learners, the third one is class mark or midpoints. It is represented by capital X, and the number, it shows the number of times each item appears in a class. Interval is called the frequency. The midpoint of the class frequency or class interval is known as the class mark. For example, the class mark or midpoint of a class interval is 5 and 10. Class boundary is given 5 and 10. What we have to do, we will add these two and then divide by 2. We get the answer, that is 7.5. So the midpoint of this class means 5 and 10 class, the midpoint is 7.5. The fourth one is class magnitude or class size. It is also represented as class height, class difference. So there are different names but same meaning. Class magnitude, class size, class height, class difference. This shows the difference between the two class limits, and it is known as class size or magnitude. The magnitude of the class interval depends on the range of the data and the number of the classes. So class size, it varies with the given question, it varies with the data, it varies with the values. So there are different names but they have the same meaning. What are these? Class magnitude, class size, class height, class difference. The fifth point is related to the frequencies available against each class of a frequency distribution, and we represent this class frequency with f, small f, and this is the sign for summation, and we call it is used for the sum of the class frequencies, like summation f identities the number of values available in raw data. Then the last one is range of the data. Range means to subtract maximum value with the minimum value. Fifth point है वो class frequency से related है, और sixth range से। और class frequencies क्या है? frequencies जो class के opposite numbers आते हैं, चाहे वो numbers of values हो raw data की, या number of marks हो, या number of doctors हो, जो डेटा में गिवन होता है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से नहीं करते। और समेशन का साइन यूज होता है, समेशन साइन
जो है वो सम को शो करता है क्वांटिटीज़ को। और इसके बाद नेक्स्ट है रेंज। रेंज में हम जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मिनिमम वैल्यू से, यानी पूरे डाटा में जो आपके पास गिवन सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर दोनों सेलेक्ट करते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेंज पता चल जाती है।